guys, I'm Anshita and welcome back to my channel. If you're new, then go click on the subscribe button and become a part of my YouTube fam. Hold up. तो अबाउट अ वीक अगो मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी पे पूछा था इफ़ यू गाइस वांट टू नो हाउ आई एडिट माय इंस्टाग्राम पिक्चर्स और नॉट एंड मेजॉरिटी लोगों ने येस को वोट किया था. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू टेल यू हाउ आई एडिट माय पिक्चर्स एंड हाउ आई मेंटेन अ थीम ऑन इंस्टाग्राम एंड या let's just get into the video. So I have used quite a lot of apps to edit my Instagram pictures and if you follow me on Instagram तो आपको पता होगा कि मेरी थीम बदलती रहती है और यूजुअली जब भी मेरी थीम बदलती है तो मेरा ऐप भी बदलता है बिकॉज आई फील लाइक मैं एक ऐप पे सारी थीम्स नहीं 2000 years later. एक्वायर कर पाती या आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज़ बट हर ऐप में अलग अलग थीम क्रिएट करना मुश्किल होता है. सो पहले द थीम आई हैड वाज लाइक अ ब्राइट वाइट थीम. सो उसके लिए आई यूज Lightroom CC एंड Lightroom CC इज़ एन ऐप विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट एंड अ लिटिल ट्रिकी टू यूज़. सो इफ़ यूर अ बिगनर यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई करना कैसे है बिकॉज मेरे साथ भी यही हुआ था. मैंने उसे इंस्टॉल किया था देन आई एक्चुअली अनइंस्टॉल्ड इट बिकॉज आई डेंट नो वॉट टू डू. आई वॉज लाइक क्या करना है मेरे को नहीं समझ आ रहा है एंड देन आई इंस्टॉल्ड इट अगेन एंड देन टाइम के साथ आई लर्न हाउ टू एडिट माई पिक्चर्स ऑन दैट ऐप. सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ आई क्रिएटेड that bright white theme and how I edited my pictures according to it on Lightroom CC, then just tell me in the comments below and I'll make a video on that. But this video is about my current theme, which is a kind of warmish theme. I'll just place the screenshot of my theme here and that is how my Instagram looks right now. I am building the theme धीरे धीरे. So if you like it and if you want to know how I edit my pictures according to this theme, then keep on watching. And I use VSCO or VSCO to edit my pictures according to this theme, and VSCO is comparatively easy to use than Lightroom. So आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ आ जाएगा हाउ आई एडिट माई पिक्चर्स एंड या जस्ट कीप वॉचिंग. So let's just get to the editing part. And also VSCO is a free app so you don't have to purchase it. And अगर आपको presets चाहिए उसके अंदर जो paid होते हैं you can purchase them, but the one I use is one of those free presets which they offer, so you don't actually have to purchase it. इसलिए yeah, let's just get to it. So this is the picture which I'll be editing today and I'll just show you how I edit it. Now I use this preset called P5 on my pictures and I usually reduce it to a plus 7.5 or between plus 7.5 and plus 8. That depends upon the picture. So this is by the way, this picture is taken from my phone only. I usually take all my pictures on my phone. It's an iPhone 7. So now what I do is I go to the exposure and I just reduce it a little, and this also depends on the picture. So I usually reduce it to a 1 or 2. Then I reduce the contrast as well. Then if I feel that my picture needs to be cropped या फिर थोड़ी straight करने की ज़रूरत है उसे, तो I use this adjust वाला option and you can crop it from here or you can even straighten it. So this picture does not actually need any cropping or straightening. So हम आगे बढ़ते हैं. Now मैं saturation को usually थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ. And all these settings by the way depend upon the picture you're editing. So कुछ photos होती हैं जिनमें naturally light कम होती है, so उसके लिए you do not have to reduce the exposure, rather increase it. So yeah, now this is my favorite part. So when I get to this tone wala option, I
reduce the highlights to like the maximum. So I've reduced the highlights and I do not do anything to the shadows. तो मैं shadows को नहीं कुछ करती हूँ and I just reduce the highlight. Then white balance. Now if I feel like मेरी photo में ज़्यादा orangish tones हैं, orangish yellowish warm tones हैं, तो I reduce the temperature, like I make it more cooler, that is towards the bluer side or the left side. And if I feel that my picture has more cooler tones like blue, purple, all these tones, then I usually just slide this bar towards the right, which is to make it warm. So this picture has orangish tones in it, so I'll just reduce the temperature and I'll make it a little bit cooler. एंड टिंट इसलिए होता है लाइक इफ़ यू फील कि आपकी फ़ोटो बहुत पिंकिश लग रही है तो यू कैन slide the bar on the left side and it will become a little greener. And अगर उल्टा है मतलब your photo appears to be a little green, then you can slide it on the right side and it will become a little pinker. So I'll just show you. ये है green और ये है pink. So आई डोंट फील लाइक इस फ़ोटो में टिंट को छेड़ने की ज़रूरत है. सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू दैट. नाउ कमिंग टू द स्किन टोन, आई यूजुअली slide this bar towards the left. That means I just reduce it. So sliding it towards the left means we're actually making the skin look more orangish, and sliding it to the right means we're making it look yellower. So I usually want it to look orangish, so I slide it towards the left. Now coming to greens, I add some greens to the picture. ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत, because फिर वो पिक्सलेट ज़्यादा हो जाती है एंड फिर वो अच्छी नहीं लगती. एंड हाँ, ये इतना ही करती हूँ मैं अपनी पिक्चर्स को एडिट करने के लिए. दिस इज़ वॉट आई डू एंड देन आई सेव इट टू माई कैमरा रोल. एंड yeah, that is how I edit my pictures. It was pretty simple. I'll show you how I edited another picture. So let's take this picture. So this picture was looked originally like this. ऐसे खींची थी मैंने इस फोटो को और अब I've edited this and it looks like this. So I'll just show you क्या क्या settings हैं इसमें. So P5, I've used the filter P5 and it's plus 7.5. Then I've reduced the exposure minus 1.4. फिर contrast भी कम करा है. And then we go to saturation. Saturation बढ़ाई है 0.8. Then tone highlights obviously पूरा reduced है and shadows touched नहीं है. वाइट बैलेंस इस पिक्चर में थोड़े कूलिश टोन्स थे, सो आई जस्ट मेड इट लुक अ लिटिल वार्म. सो आई हैव इंक्रीज्ड द टेम्परेचर और लाइक मेड इट लुक वार्म. एंड टिंट पिंकिश टोन्स थे, सो आई हैव मेड इट लुक अ लिटिल ग्रीन, सो बैलेंस करने के लिए. सो इसलिए टिंट इज़ minus 0.4. Now coming to the skin tone, I wanted this to look more yellowish because it already had a lot of orange tones in it. So इसलिए I just slided the bar towards the right. And finally I've not added greens to this picture because इसमें text है and अगर मैं greens add करूँगी तो जो text है वो blur दिखने लग जाएगा. So इसलिए I've not added greens to this picture. But if you're like editing a picture of yourself or समथिंग एल्स जिसमें टेक्स्ट नहीं है या फिर कुछ पढ़ने वाला या कुछ बहुत ही फोकस करने वाला नहीं है तो आप उसमें ग्रीन्स ऐड कर सकते हो. So this is how I edit my pictures. So if you want me to show you how I like organize my theme and all, I can make a video on that as well. So please tell me the comments below. And this was pretty much it. This was how I edit my pictures and I hope कि this video was helpful and I hope कि आपको समझ आ गया हो how I edit my pictures. अगर कुछ भी doubt है, you can ask me in the comments below and I'll try to reply to all of you. And yeah, thank you for watching and give it a thumbs up if you liked the video and if it helped you, and also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you for watching till the end and bye.